And I will keep people joining, and I will make you also host now. Or why I not able to make you co-host? Okay, let me just see if I can make you somehow co-host. Okay, I will make you a host. Dhruvam sir, can you make me co-host? If you can just make me co-host, because now I made you host, but then I cannot keep adding the people, right? So I'm only getting one option, that is make you as a host. That's it. There is yeah, no other make you option a which is coming co-host. up. Yes, yeah, yeah, make me co-host. Yes. It's not co-host, it is host. Is it how it's also for me also coming like that? Okay, so no problem. You can go on. Yes. You want to share No anything? problem. No, I don't have anything. I'm just here to answer the questions. That's it. Oh, okay, okay. Then that's fine. Then I will be host. So I will get No people. problem. You can remain as a host and ask, take up the questions. Yes. Then I'll answer to them. Yes. 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 Okay. Yes. Yes. So anyone have any questions for the Dhruvam sir? We can start now, and Dhruvam sir will give you the best possible answer based on his vast experience and learning. So yes, you can type your question in the chat box. Anything related to entrepreneurship, startup, and what are the challenges that you might be facing right now, or how to, even if you want to do, how to start it, or yes, so you can also add. I just wanted to know before starting up, because it is started a very straightforward way. So I just wanted to understand that whether those who are connected here on this platform, are they aware about that what we do, why am I here in front of you, and why Rushi has chosen me to answer all those questions. So be it open, guys, because I never understand, or we just all are here to exchange the things and exchange communication. So I'll also be very friendly with you. I'll try to use, as always, whatever things are happening around me, I always keep on sharing that learnings over multiple social media platforms. Those who are connected with me, be it on LinkedIn, maybe on Twitter, maybe on Facebook. So just be it very friendly. Ask whatever doubts you have, okay? And I'm always ready to answer in a very simplified way based on the experience what I have gained till now. So it will be definitely a great session, and looking forward for some interesting questions from you all. Agar, if anybody in this room is not aware that what am I doing, or what is our company is all about, they can ask that question as well. I'll be answering to that also. Fine, Rushi. Anything you wanted to add? No, I think that's good, sir, and I think you can start. Yes, talking about your journey maybe, and what some of your challenges might be you faced Yeah, at fine. the So very early. what we will do is we'll just keep it like this way, because I just wanted to you know give brief about myself to those who have joined this webinar. Yeah. Hello everyone, my name is Dhruvam Thaker. I'm 34 years old, joining live from Ahmedabad, Gujarat. That is where I stay here, and it is our company headquarter too. I represent and started a company called the Smart Taxi in 2016, with only one cab which I was driving by myself. The only reason for doing this on a background wise, I am a mechanical engineer, business administration and operation management. I worked for 8 years in two different companies. One was a multinational company, another one was world's largest telecommunication infrastructure company. Both there I was playing a different role. For the first company, I was more into production and planning. For second company, I was corely into supply chain management. During both these tenures, I have traveled a lot of time. Most of the time, my company used to hire a cab facilities for me, and there I found a lot of gaps.
So in terms of car hygiene, in terms of driver behavior, in terms of the services or experience what they were delivering against the prices what they were being paid off. So then finally, parallelly, when I was traveling into flight and I was staying in the hotel, I found absolutely different level of hospitality. That is the reason I decided to start the smart taxi. And I dreamed a first line that is a cab which is offering hospitalities like airways and features like one-star hotel. This was in 2012 when I was part of my job. Now, from there till starting the company in 2016, those 4 years were absolutely from up and down. That means I was not sure that whether I'll be able to, most of you, whenever you decide that you wanted to start something on your own, you always see that you will have a lot of queries in your mind which might not be answered well. So, financial crisis, family responsibilities, social responsibilities, how I am going to face to the people that being an engineer I had to drive a taxi. So I was just preparing myself for that, and it took me 4 long years to build up a courage to made up my mind finally that नहीं इसके बाद में मुझे जॉब नहीं करना है. I wanted to do this on a personal front. जो लोग मुझे मतलब I'm very introvert person, to be very honest, because it might surprise you because you might have seen a lot of things which is happening from my side on social media. But on a personal side, yes, I'm a bit shy by nature. And I Hindi is very close to my heart rather than it is, because I always consider that, because हम जब भी language में बात करते हैं, I always feel that the thing which is more connective with each other, it is probably the language and the communication. So हिंदी हमेशा से मेरे दिल के काफी करीब रही है. Same reflect even my in my lifestyle as well. So I'm very simple person. आज भी दाल रोटी चावल पे मुझे ज्यादा मजा आता है खाने में rather than going for any multi cuisine restaurants. ऐसा नहीं है कि मैं और कुछ नहीं खाता हूँ. Yes, of course I do try a lot of cuisines as well, but फिर भी आज मेरा basics भी simplicity पे रहता है. In terms of music, डेफिनेटली हिंदी गाने मुझे बहुत पसंद है. ज्यादातर रॉक पॉप जैज वो सब मुझे उतना नहीं मजा आता है सुनने में. एंड देन बेसिकली व्हाट आई से इज ऑलवेज द सॉन्ग which gives which has a real meaning, जिनके वर्ड्स काफी अच्छे होते हैं, जिनका म्यूजिक अच्छा होता है, जो सुनने में काफी सूथिंग एंड पीसफुल लगता है, वो मैं हमेशा से सुनना ज्यादा पसंद करता हूँ. आप 1990s के गाने देख लीजिए, 2000 के देख लीजिए, 2010 सोनू निगम, अरिजीत सिंह. ये these are the few singers whom I always listen and prefer. और पूरे दिन में जितनी भी मेरी जो भी काम होता है पूरे दिन में I always ensure that around 20 से 25 मिनट I spend for myself, where I lock myself into a room. पूरे दिन में जो भी चीजें होंगी, that everything I memorize, good, bad. If it is a good, it will give me a positivity. If it is a bad, or if something went wrong, I always try to see that what went wrong, and then again we just learn it up, and then for the next day I charge up myself. So this is what about my personal. Coming to company, as I already stated, the reason why I started this company. Whenever I introduced myself into a market at that point of time, there were many players with tech enabled, those who were having an app where you can tap a button and call the cab, whereas we were operating absolutely on a traditional model. फिर भी हमने दो चीज हमेशा से दिमाग में रखी बिफोर कंटिन्यूइंग टू द कंपनी. नंबर वन, चाहे कुछ भी हो जाए, वॉट एवर, वेदर वी पास वेदर वी फेल, हमें आगे बढ़ना है. ठीक है, कितनी भी डिफिकल्टीज हो, कितनी भी चैलेंजेस आए, वी विल फॉल, वी विल अगेन स्टैंड अप एंड मूव अहेड. सो और दूसरी जो चीज थी कि हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे कस्टमर्स जो भी हमारे साथ यात्रा करके जाते हैं, दोज हु आर बुकिंग आवर कैब्स, वी वांटेड टू गिव देम एब्सोल्युटली प्रोफेशनल, जीरो कॉम्प्रोमाइज एंड डिफरेंट लेवल ऑफ अ कार एक्सपीरियंस. सो ये दो चीज पे, चाहे उस दिन से लेके, मतलब जब एक कैब एक सिटी से लेके आज हम लोग 42 cities में हैं, मोर देन 920 cabs we have, still we are managing without any app. So then so these things are because our core intention was to give a very personalized service to each and everything. We don't wanted to consider everybody as a same group. No, everyone has different needs, and every different need we solve it with a personalized touch, with a human touch, what we offer into our cabs. तो ये दो चीज में चाहे कितनी भी बाधाएं आई, कितनी भी चैलेंजेस आई, ये दो चीज पे हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है. पहले दिन पे भी नहीं था और आज पे भी नहीं. हाँ, इसके दौरान हम लोग काफी बार गिरे हैं, काफी बार वी वेर एट अ अर्ज ऑफ क्लोजिंग आवर कंपनी बिकॉज फाइनेंशियल क्राइसिस काफी थे. बट फिर भी वहां से हम लोग वी अगेन बाउंस बैक, एंड टुडे वी स्टिल आर कंटिन्यूइंग आवर जर्नी without any external funding.
जर्नी की जब शुरुआत हुई थी तब मेरे पास जो भी मैंने मेरे जॉब कॉर्पोरेट टेन्योर पे जो व्हेन आई क्विट माय कॉर्पोरेट टेन्योर व्हाटएवर द अमाउंट आई वाज लेफ्ट विद, उससे मैंने शुरू किया था। आई वेंट टू, जैसे ज्यादातर लोग हम ये सोचते हैं कि भाई कुछ भी चीज शुरू करने के लिए आपके पास सबसे पहले पैसे चाहिए, दूसरा होता है आपके पास टेक्नोलॉजी चाहिए, तीसरा होता है आपके पास आइडिया चाहिए। मेरे में पैसे बहुत थोड़े थे, जिस हिसाब से मैं सोच रहा था उस हिसाब से आई वॉज अनेबल टू get the financial help from people. So I approached banks, got rejected. I approached to friends, family members, got rejected. Startup centers, incubators, सभी के पास गया, प्राइवेट इन्वेस्टर्स। बट बेसिकली ऐसा था कि जैसे जब भी मैं कोई भी अपना रिप्रेजेंट, वेन एवर आई वॉज प्रेजेंटिंग माई कंसेप्ट टू पीपल, दे वर नॉट रेडी टू बिलीव इन आइडिया। उनको आइडिया पे भरोसा नहीं था। मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर्स और मेरे रिलेटिव, उनको मुझ पे भरोसा नहीं था। एंड फाइनली बैंक, इंस्टीट्यूशंस, स्टार्टअप सेंटर्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स, उनको नंबर्स पे भरोसा नहीं था। सो ये तीनों चीजें मिला के अल्टीमेटली हमेशा ये रहता था कि यार अगर चलो ठीक है, लेकिन एक चीज ऑलवेज रही है कि चाहे किसी को भरोसा हो ना हो, आई ऑलवेज केप्ट सेल्फ बिलीव अलाइव। सो बिकॉज दैट इज व्हाट माय फादर, माय पेरेंट्स हैव टॉट अस कि चाहे यार कुछ भी अगर आपको लगता है कि थिंग्स आर गोइंग राइट और आपको लगता है कि चीज चलेगी, तो आप उसके पीछे कंटिन्यू अपने एफर्ट्स लगे, इट विल डेफिनेटली ग्रो। अभी ये क्या टाइम था कि इतने टाइम में ग्रो होगा, दैट नोबडी कैन गेस एंड इवन आई वाज आल्सो नॉट श्योर। मुझे भी नहीं पता था कि चीजें 3 साल में सही होंगी, 30 साल में सही होंगी, 10 साल में, 5 साल में। बट एक चीज था कि अगर शुरू किया है तो समवेयर डेफिनेटली थिंग्स विल टर्न अप। मुझे सिर्फ आई हैव टू पुट माय एफर्ट्स कंटिन्यू। और जो मैंने आपको 2 विजन दिखाए, वो 2 विजन को हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते गए, कैसे भी करके 5 सितंबर 2016 पे आई रिमेम्बर आई स्टार्टेड द कंपनी। मेरे घर में एक अनयूज्ड डाइनिंग टेबल है, जो हम लोग ज्यादातर, बिकॉज वी आर गुजराती, वी ऑलवेज बिलीव इन इन सिटिंग ऑन लैंड एंड देन हैविंग योर लंच। सो लंच डिनर खाना हम लोग हमेशा जमीन पे बैठ के खाते हैं। तो डाइनिंग टेबल का ज्यादा यूज नहीं था घर में, फिर भी रखा हुआ था। तो मैंने उस डाइनिंग टेबल पे बैठ के, मेरी कंपनी से मुझे एक लैपटॉप मिला था, बिकॉज उसका वैल्यूएशन 0 हो चुका था, तो दे हैव जस्ट ऑफर्ड मी दैट लैपटॉप। वो लैपटॉप से मैंने कंपनी की शुरुआत की थी। जस्ट एक बेसिक सा 1100 रुपए का जो सैमसंग का एक गुरु फोन आता है, वो गुरु फोन था मेरे पास टू लिफ्ट द फोन। और वहां से फिर हमने कंपनी की शुरुआत की। सारे शुरू शुरू में बैनर्स मैं खुद बनाता था, अपने आप को मार्केट भी मैं खुद ही करता था, कस्टमर की इंक्वायरीज भी खुद ही उठाता था, आंसर करता था, फाइनली राइड्स भी खुद ही करता था। 600 रुपए, तो पहले 90 डेज तक हमारे पास कोई भी रेवेन्यू नहीं था। 2 EMIs ऑलरेडी बाउंस हो चुके थे। और शुरू शुरू में इतना होने के बाद में पीपल हैव स्टार्टेड टेलिंग दैट यार ये चीज नहीं चलने वाली है, वी टोल्ड यू दैट दिस थिंग वोंट वर्क। बट उस टाइम पे होता है ना कि अंदर से एक ड्राइव फोर्स होता है विच कंटिन्यूअसली पुल्स यू आउट टू, एंड दैट वाज कंटिन्यूअसली, चाहे कुछ भी हो जाए, ये चीज उसी डायरेक्शन में आई वाज कंटिन्यूअसली ड्राइंग माई सेल्फ, पुलिंग मी टू दैट डायरेक्शन एंड मेक द थिंग्स हैपन, वर्क वेल ऑन ग्राउंड। उसके बाद में धीरे धीरे कभी जैसे भी ये सारे क्राइसिस चलते गए, उसके पैरेलली हमें 90 डेज के बाद वी गॉट आवर फर्स्ट ऑर्डर। 600 रुपये हमारा पहला रेवेन्यू था। 600 रुपये से हमने शुरू किया। बट हमेशा से यही फोकस रखा है कि यार जो भी हमारे साथ, हमें 1000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख कस्टमर नहीं चाहिए। जो कस्टमर हमारे पास आते हैं, हम उनको वी इंश्योर दैट व्हाट आर द सर्विसेज वी आर गिविंग टू देम, दैट इज सो वेल एंड सो 100, सो परफेक्ट, सो परफेक्शन कि वो एक ऐसी मेमोरी लेके जाए दैट दे स्प्रेड अबाउट आवरसेल्फ इनटू देयर फ्रेंड्स, इनटू देयर फैमिलीज, कलीग्स, और आगे जाके वो हमें राइड करें। यही स्ट्रैटेजी से हम ग्रो किए। और पर्सनलाइज टच के बारे में अगर बताऊं तो द स्मार्ट टैक्सी और बेसिक टैक्सी, जैसे जनरली वही, जैसे टैक्सी की बात आती है तो पीपल ऑलवेज कंसिडर अस लाइक अनदर मॉडल फॉर उबर हो गया, ओला हो गया। बट हमारे में एक्चुअली इट इज मोर अबाउट अ पर्सनलाइज फीलिंग, इट इज मोर अबाउट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। बेसिक सी चीज बताता हूँ, जैसे आप जनरली कैब बुक करते हैं तो आपके पास एक कार आती है, आपके पास एक ड्राइवर आता है जो आपको एक पॉइंट से लेके जाता है, दूसरे पॉइंट पे ड्रॉप करता है, आप उसको पेमेंट करते हो, आपका एक्सपीरियंस खत्म हो गया। यही चीज जब द स्मार्ट टैक्सी के साथ होती है तो कैसे होती है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन। सबसे पहले तो आप जब भी हमारे पास कोई ऐप नहीं है, पीपल दे कॉल अस। तो जैसे ही आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, देयर इज नो आईवीआर, दैट मीन्स आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि इंग्लिश के लिए 1 दबाइए, हिंदी के लिए 2 दबाइए, अपने रीजनल लैंग्वेज के लिए 3 दबाइए, या फिर बुकिंग करने के लिए 1 दबाइए, नथिंग। यू डायल अ नंबर, within 5 seconds you will straight forward connected to one of our executive, जो आपको रियल टाइम असिस्ट करेगा। और वो भी कोई रोबोट या कोई चैटबॉट नहीं है, वो दे आर रियल ह्यूमन दोस हु विल अंडरस्टैंड योर क्वेरी, और आपको आपकी क्वेरी के हिसाब से आंसर करेंगे। दिस इज ओवर फोन।
दूसरी चीज है सेम हमने व्हाट्सएप पे भी इम्प्लीमेंट किया, बिकॉज काफी कस्टमर व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी को देख के दे प्रेफरिंग अस टू बुक इट ओवर व्हाट्सएप एज वेल। तो हमने व्हाट्सएप हेडलाइन शुरू की, दैट इज ऑपरेशनल फ्रॉम 8 AM to 8 PM, जिससे आप हमें व्हाट्सएप करके भी बुकिंग करवा सकते हैं। अभी तीसरी जो आती है मेन डिफरेंशिएशन, दैट इज सर्विस। सर्विस में हमारे पास पॉइंट ए टू पॉइंट बी से लेके 3 टाइप की मेन सर्विसेज है। सबसे पहली सर्विस जो है हम लोग एयरपोर्ट ट्रांसफर देते हैं 24/7 विदाउट सर्च प्राइसिंग। आप बार बार जैसे जानते हो कि सर्च प्राइसिंग इज वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी फॉर ऑल ऑफ यू दोस हु आर कैब यूजर्स, बिकॉज काफी बार डिमांड सप्लाई के गैप की वजह से प्राइस सर्च हो जाते हैं एंड यू आर पेइंग इन एंडिंग अप इन पेइंग हायर प्राइस। तो वी हैव केप्ट अ प्राइस व्हिच इज फिक्स्ड। 24/7 एयरपोर्ट ट्रांसफर्स सिर्फ फिलहाल के लिए बेंगलुरु में अवेलेबल है। देयर आर नो अदर सिटीज वेयर वी आर ऑपरेटिंग एयरपोर्ट ट्रांसफर्स। दूसरी जो दो सर्विस है वो हम सभी सिटीज जितने भी यहाँ पे हमारे प्रेजेंस है 42 सिटीज में सभी जगह पे देते हैं। सबसे पहली सर्विस है वो सिटी रोमिंग है, जिसमें हम लोग आवरली रेंटल्स पे कैब देते हैं। दैट मीन्स आपको अगर मल्टीपल प्लेसेस विद इन सिटी कवर करने हैं विदाउट चेंजिंग अ कैब, तो फिर ये पैकेज आपके लिए सही रहता है। एंड दिस इज ऑलमोस्ट अराउंड 12 से 13% जो हमारे कस्टमर्स है दे आर प्रिफरिंग दिस पैकेज टू गो। तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट और हमारे सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटर, जिसके लिए लोग हमें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वो है आउट स्टेशन जर्नीज, जिसमें आप हमारे से कैब बुक करके यू कैन ट्रेवल एनीवेयर अक्रॉस इंडिया फॉर एनी नंबर ऑफ डेज। कार्स में हमारे पास हैचबैक्स हमने नहीं रखी है बाई कीपिंग कस्टमर कंफर्ट एज अ कंसिडरेशन। हमारी जो बेसिक ऑफरिंग है वो सेडान से शुरू होती है। सेडान हमारे पास डिजायर, एक्सेंट, इटियोस, अमेज, यहाँ से हमारी कार शुरू होती है। एंड वी गो अप टू प्रीमियम रेंज कार्स एज वेल, जैसे BMW हो गया, ऑडी हो गया, जैगवार हो गया, सभी टाइप की कार हमारे पास इसके बीच की जो भी रेंज है वो सारी अवेलेबल रहती है। अभी जो मेन पर्सनलाइजेशन की बात आती है, जैसे मैंने आपको बताया था हॉस्पिटैलिटीज लाइक एयरवेज एंड फीचर्स लाइक स्टार होटल, ये हम लोग कैब में कैसे करते हैं। जब भी आप हमारे पास कैब बुक करते हैं तो कार में हम लोग आपको 3 चीजें बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर करते हैं। दैट मीन्स आपके पास आपको बगैर बताए ये चीज आपकी हर एक कार में जो भी बुकिंग करते हैं उसमें रहेगा। सबसे पहला होता है पानी की बोतल रहती है। दूसरा रहता है खाने के लिए आपको नाश्ता मिलेगा। नाश्ता दैट मीन्स इट इज नॉट लाइक समथिंग व्हिच वी पिक इट अप फ्रॉम रोड एंड देन वी ऑफर इट टू, नो, इट इज अ ब्रांडेड पैक्ड स्नैक्स। दैट मीन्स आइदर इट विल बी पेप्सिको स्नैक्स, आइदर इट विल बी ITC स्नैक्स, मतलब ये सारी कंपनीज के स्नैक्स हम लोग आपको ऑफर करते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी प्रीमियम रेंज, लेज हो गया या फिर बिंगो हो गया। सो ये सारे ब्रांड व्हाट वी ऑफर टू यू ड्यूरिंग द राइड। तीसरी जो चीज है प्रीमियम कुकीज हम लोग ऑफर करते हैं, प्रीमियम बिस्किट्स ऑफर करते हैं। दैट इज अगेन a very branded biscuits. Sunfeast Dark Fantasy is what we offer generally into all our rides. दूसरे उसके ऊपर चोकोपाई जो होती है, चोकोपाई हम लोग ऑफर करते हैं। एज एन ऑल्टरनेट टू दैट वी ऑफर सर्टन ब्रिटानिया प्रीमियम रेंज बिस्किट्स। सो ये सारी चीजें हमारी हर एक कार में आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। दूसरा, कार क्वालिटी बेस्ट होती है उसके। दैट मीन्स देयर इज नो मच पेंट डेंट, कोई टूटा फूटा शीशा है या फिर किसी का ग्लास नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें हमारे में नहीं होगी। एब्सोल्युटली बेस्ट मेंटेन्ड कार्स फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, दैट मीन्स क्लीन होगी आपकी। बाहर भी मतलब उसके ऊपर कोई भी स्टिकरिंग नहीं होगा। इट इज नॉट लाइक दैट यू आर सिटिंग इनटू और आप साथ साथ किसी का ब्रांडिंग कर रहे हो। हमारी एक भी कार में कहीं पे भी कोई स्टिकर्स नहीं लगे होते। इट इज एब्सोल्युटली स्टिकर फ्री एंड बेस्ट मेंटेन्ड कार। तीसरी चीज है जो हमारे ड्राइवर्स हैं, दे आर वेरी कर्टियस, बिकॉज हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी के पास अगर लाइसेंस है या उनके पास टैक्सी है तो दे कैन ड्राइव फॉर द स्मार्ट टैक्सी। नो, वी हैव 6 steps ऑफ प्रोसेस विच वी आस्क एवरीवन टू पास थ्रू फ्रॉम। जो भी हमारे साथ यात्रा करना चाहता है सभी वो सारे प्रोसेस से पास होता है। उसके बाद में उसमें उनकी प्रोफेशनलिज्म देखी जाती है, उनके ड्राइविंग स्किल्स। वी टेस्ट देयर ड्राइविंग बिहेवियर्स एज वेल, वी टेस्ट देयर कस्टमर बिहेवियर्स, कर्टेसी कितनी एक्सपेक्ट करते हैं। वी आस्क सर्टेन रियल लाइफ क्वेश्चंस टू देम, वी टेक इंटरव्यूज फॉर द ड्राइवर्स एंड फाइनली दोज हु गॉट सिलेक्टेड वही हमारे साथ राइड करते हैं। दे आर द वन हु राइड्स फॉर अस। सो हमेशा हम ये लोग ये देखते हैं कि आपके पास जो भी कार आती है वो एब्सोल्युटली बेस्ट हो और आपको एक ही एक्सपीरियंस मिले, चाहे आप हमें मुंबई में बुक करवाए, चाहे आप हमें दिल्ली में बुक करवाए, चाहे आप हमें साउथ में कहीं पे बुक करवाए। सो एवरीवेयर वेरेवर वी हैव प्रेजेंस वी ऑलवेज एंश्योर दैट वी विल गिव वन एक्सपीरियंस टू यू। उसके अलावा अगर आपको कोई कस्टमाइजेशन चाहिए, जैसे किसी को स्पेशल वेलकम करवाना है, किसी को आपको कोई स्पेसिफिक मैगजीन चाहिए, आपको कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर चाहिए, खाने के लिए फ्रूट बास्केट चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स चाहिए, फर्रो रोशर चॉकलेट्स चाहिए, या any customization, we have around 17 features what we offer as a customization which you can opt for and ask us, that is on additional chargeable users. So वाईफाई से लेके Amazon Kindle तक हमारे पास सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन है। आप वो भी हमारे साथ यात्रा करने के टाइम पे हमें बोल सकते हैं।
और वो हम आपके साथ आपकी गाड़ी में भेजेंगे। अभी आपको ये लगेगा कि इतनी सारी चीजें हम लोग इंस्टेंट कैसे कर सकते हैं, दैट इज द रीजन, दैट दिस इज वेयर द कोर डिफरेंसेस। हम हमारे सारे बुकिंग्स जो हैं वो एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स प्रायर टू द जर्नी करते हैं। उसके बाद में अगर कोई बुकिंग आता है उसकी इस टाइमलाइन के बाद में, मतलब कि 24 घंटे से कम टाइम के अंदर अगर कोई बुकिंग है, तो दैट विल बी सर्व्ड प्योरली अगेंस्ट अवेलेबिलिटी। वी आर सो फॉर्चुनेट कि आज तक हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, बिकॉज हमारा ज्यादातर जर्नी आउट स्टेशन रहा है, तो दे आर वेल प्लानिंग, दे आर प्लान्ड वेल इन एडवांस, और उसी के बेस पे हमें वो लोग एडवांस में बुकिंग करवाते हैं। और हमारे पास 30 डेज इन एडवांस तक बुकिंग लेने के प्रोविजन भी है। मतलब कि आप 30 दिन के पहले की, 30 दिन के बाद की जर्नी का भी आप हमारे पास बुकिंग 30 दिन पहले करवा सकते हैं। ये हमारे सबसे मेन है। तो इट इज जस्ट लाइक कंपेयरिंग टू डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स with a two different vision. हमारे पास जो विजन है that is for quality, for customer centricity and everything. Coming to revenue model, हमारा सबसे बड़ा जो मेन रेवेन्यू शेयरिंग है वो हमारा B2B से आता है। दैट मीन हम लोग डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ते हैं, उनके एम्प्लॉयज को सर्विसेज देते हैं अक्रॉस इंडिया। दिस इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 71% ऑफ आर टोटल बिजनेस एज ऑन टुडे। बाकी का जो है दैट कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल कस्टमर्स, जो लोग हमें इंडिविजुअल बेस पे बुक करवाते हैं, उनसे 29% हमारा रेवेन्यू ओवरऑल आता है। तो इसी तरह से टोटल हमारा जो भी ऑपरेशन है वो यही मेथड से रहता है। हर एक चीज में, हर एक राइड में आपके ऊपर पर्सनली फोकस किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, द स्मार्ट टैक्सी के लिए नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, योर डिलाइट विच इज व्हाट वी कॉन्स्टेंटली फोकस अपॉन। और हम ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि अगर हम आपके डिलाइट पे फोकस करेंगे तो आप हमें बिल्कुल हेल्प करेंगे हमारे बाकी के सारे जो नंबर्स है उसको अलाइन करने में। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी केप्ट ऑन ग्रोइंग फ्रॉम पास्ट 4 years कॉन्स्टेंटली with a CAGR of around 80% year on year, despite of not offering any external funding from outside. So this is what the short and brief about us. जितनी भी कुछ चीजें मुझे लगी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आपके साथ अभी नाउ आई वुड लाइक टू टेक अप अ क्वेश्चन। ऋषि, अगर आप क्वेश्चंस अगर कुछ है आपके पास तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, आई विल आंसर दैट। Sure, Dhruvam sir. So let's go into. Thank you for your nice introduction, as well as talk about the very unique way of having a experience of booking a taxi or driving in a taxi or cab, right? So I think yes, that's very good, and I think there are a couple of questions we have already here. So yes, first one is from. Yes, I don't. Yeah. Hello, sir. Many congratulations on running a successful non-IT company. I've been following you for your post in LinkedIn, and they have been very motivating and pleasant. Thank you. Could you please share two failure points and how you overcome those? So that's the first one. Okay, there are two, right, two Yes, failure yes. points. The first failure what I came across was I was very bright student when I was in 12th, and the first failure was that in 12th. So 12th science, I could not able to clear any of the subjects, being in math, science, whatever as a science student must complete or must study very hard. All that subjects I failed into. So that was the first failure. From that, for a few days, I was actually not able to cope up with myself, because it was very demotivated feeling. People were starting to 10वीं में इतने अच्छे परसेंटेज लेके आया लेकिन 12वीं में फेल हो गया। So a lot of things I was able to hear, but finally then I decided कि चलो कोई बात नहीं, मेरा 12th अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ है तो एटलीस्ट मेरे 10th में मेरे परसेंटेज अच्छे हैं, तो उसके बेस पे लेट मी जॉइन सम डिप्लोमा कोर्सेज। वहां से फिर आई चेंज माय ट्रैक एंड आई जॉइन टू डिप्लोमा। सो वहां से फिर once I joined diploma, I become very sincere in terms of studies and finally completed my engineering with silver medal from the university. ये मेरा सबसे पहला फेलियर था। दूसरा जो कंपनी के टाइम पे, जहाँ पे अभी जो है रिसेंट टाइम की बात करूँ, जहाँ पे ऑलमोस्ट सभी बिजनेसेस बात करते हैं, विच इज अबाउट कोविड टाइम। कोविड टाइम में हमारे पास, जैसे कोविड के पहले हम लोग जो B2B, जैसे मैंने बताया, दैट वाज अराउंड 90% ऑफ बिजनेस हमारा B2B से आता था। दैट इज वेयर ए कॉर्पोरेट कार रेंटल कंपनी। उस समय हमने ये देखा कि बिजनेसेस, लोगों के सभी के ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट बंद हो गए थे, लेकिन बिजनेसेस के ट्रैवलिंग को शुरू होने में थोड़ा टाइम था। बट इट वाज द इंडिविजुअल कस्टमर्स दोस हु वर एक्चुअली इन अ नीड, बिकॉज कोई दिल्ली में काम करता था जिसका घर मुंबई में था, कोई पुणे में काम करता था जिसका घर दिल्ली में था। सो दिस एंड दे वर नॉट हैविंग एनी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन। उसके साथ साथ उनको ये भी था कि अगर हमें ट्रैवल करना है तो हमें प्रोसीजर क्या फॉलो करनी है, व्हाट आर द गाइडलाइंस वी नीड टू फॉलो, क्वारंटाइन नॉर्म्स क्या है। क्योंकि उस समय
हर एक स्टेट अपने अलग अलग नॉर्म्स बनाता था, सेंटर एक और नॉर्म्स इम्प्लीमेंट करता था, एंड पीपल जिनको भी ट्रैवल करना है दे वर नॉट अवेयर कि हमें कहाँ से परमिशन लेनी है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्वारंटाइन नॉर्म्स है। सबसे पहला चेंज हमें उस समय एक्चुअली उस समय हमारे पास सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये था कि हमारा पहले से फोकस, our focus was from day one, it was more on quality and experience, and we found that compared to any other companies available at that point of time, we are actually in the best place because हमें क्वालिटी के ऊपर फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। ओनली थिंग विच वॉज मोर फोकस्ड एंड सेंट्रिक वॉज हाइजीन। और उसमें क्या हुआ, ये जो भी कोविड का टाइम आया, दैट हैज एक्चुअली एंटायरली शिफ्ट the formula of the people before they were booking the cab, because पहले price was the best concern for them because उनको सबसे सस्ता कौन देता है, people were traveling with them, but as soon as this covid announced, people started सबसे अच्छा कौन देता है उनके साथ travel करो। So we found ourselves in a much better position at that point of time। हमें सिर्फ कुछ कोविड रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशंस करने थे, जैसे कि कैब सैनिटाइजेशन हो गया, ड्राइवर को मास्क हो गया, ड्राइवर का हेल्थ चेकअप हो गया, एंड दैट हमारे जो भी पार्टनर्स थे जब हमने उनको सिलेक्ट किया था उस समय पे हमने we also observed one of the quality that was adapting to change। So when we asked people to follow, they were immediately told कि नहीं यार ये तो सर हम लोग कर लेंगे। So as soon as we implemented that on ground, so सब कुछ हम लोग ने रेडी कर दिया, सारी पॉलिसीज हमने स्टडी कर ली, वी मेक अ सिंपल डॉक्यूमेंट एंड इंट्रोड्यूस दैट wherein we were providing cab facilities to the people। Along with that, we were assisting them in opting for permissions from the government to travel। उनको नॉर्म भी समझाते थे, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ आपको कैब चाहिए, कैब दे दिया, ड्राइवर दे दिया, बाकी आप अपने हिसाब से देख लो, नहीं। इट इज बियॉन्ड कैब सर्विस। दैट मीन्स हम लोग आपको आपका अप्रूवल प्रोसेस भी समझाएंगे, आपको क्वारंटाइन नॉर्म्स भी समझाएंगे, आपको क्या कहाँ से अप्लाई करना है, परमिशन कैसे लेनी है, ट्रैवल के दरमियान क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। एंटायर असिस्टेंस वी वर गिविंग टू आवर कस्टमर्स। और इसी की वजह से शायद हमें उस समय हमारा जो पोर्टफोलियो था, हमारा जो रेवेन्यू था, इट स्टार्ट अगेन जनरेटिंग मोर रेवेन्यूज फॉर अस। दूसरी चीज जो हुई, जो इसमें जब भी ये ट्रैवलिंग हुए तब लोगों के बिल, इट वाज वेरी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। लोगों ने मुंबई से कोलकाता तक हमारे साथ ट्रैवल किया है, विच वाज अराउंड 1000 किलोमीटर की जर्नी होती है। तो इट इज देन पीपल वर एंडिंग अप इन पेइंग अ लॉट ऑफ अमाउंट, बिकॉज उस समय उनके जो बिल होते थे वो 20,000, 22,000, 30,000 उस हिसाब से आते थे। तो वी डिसाइडेड कि यार एक साइड जैसे लोगों के बिल बढ़ते जा रहे हैं, ट्रैवलिंग इज देयर नीड राइट नाउ बिकॉज दे वांटेड टू गो बैक टू होम, पैरेलली दे आर लूजिंग देयर जॉब। मार्केट में बहुत सारे ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, दे अप्लाइड सैलरी कट। तो हमने ये सोचा कि व्हाई कांट वी इंट्रोड्यूस समथिंग जिसकी वजह से लोग हमें ट्रैवलिंग भी करें एंड दे कीप ऑन पेइंग टू अस विदाउट मच ऑफ हैसल। सो ईएमआई वाज द फर्स्ट thing which came up to our mind. Now EMI for home appliances, EMI for mobiles, ये सारी चीजें it is very common. But EMI for car rentals, that was something which we were trying first time. I probably became the first company in India to introduce this service. और ये भी हमने सिर्फ 5 दिन के अंदर 7 बैंक के साथ टाइप करके एक मीडिएटर के थ्रू we introduced this service and we started offering to the people, जिसमें आप अपनी बिल का भुगतान 3 महीने की ईएमआई से लेके 12 महीने की ईएमआई तक हमें कर सकते हैं। दिस अगेन बूस्टेड so this was every time हमने हमेशा से ये सोचा है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, those who are riding with us, उनके लिए which is more feasible for them, we always put that into a place, and that is probably the reason why we are able to get lot of customers, their loyalties। और आज तक हमने कोई भी कस्टमर को डिस्काउंट के बेस पे गेन नहीं किया है। वी हैव नॉट गेन्ड एनी कस्टमर्स पे सर आप 99 ऑफ ले लीजिए, आप हमारे साथ राइड कर लीजिए, नो। we have gained our customers purely based on our values, based on our commitments, based on our services what we are offering। और जो भी हमने कमिट किया है that we delivered, and that is the reason those who were riding with us 1 year or maybe 2 years ago, they are still riding with us despite of n number of discount options available with them। So this is what we have constantly focused, और यही हमारा focus even आगे भी रहेगा to answer your question। Yes Rushi, next question please। Yeah, thank you. Thank you, Dhruvam sir, for a very informative and elaborative answer. Hope that helps them. Moving to the next one, it says how you build a team when you do not have a funding in start. Yes. It is from Ritesh So Kumar. अच्छा, okay। So Ritesh, what happened here is like whenever for first 1.5 years, I have entirely driven this company by myself. That means attending the calls by myself, attending driving for the customers by myself. Of course, by that time I was having a car. Means there were people those who were connected with me, but on the forefront or maybe on a company side, I was the only one who was doing that। I have not put
anybody into a soup, which I was into, until and unless I made myself sure that nahi, now I'm able to pay them well, now I'm able to pay them right on time. Or mujhe, because see, this is a startup wherein anything could come up on the next day which you might be not aware of. So जब तक मुझे ये नहीं लगा कि now I am in a capacity to hire a people and to pay them timely, because see, if somebody is joining you, you definitely you have to take care. So we are not a company that we hire a people where we need and then we fire them whenever we don't need. कोविड के टाइम पे भी जब हम लोग we started hearing this news, people have come and asked me that सर ऐसा तो नहीं है कि you are planning for something like that. Don't worry यार, अगर कंपनी के पास थोड़ा बहुत पैसा नहीं भी रहा तो we will manage somehow, but we will not let you down anywhere. So we hold hand of the people. So जहाँ तक पूरे 1-1.5 साल तक entire activities are managed by myself, including रात को 12 बजे 1 बजे तक 24/7 हमारी हेल्पलाइन में लोग मुझे कॉल करते थे. आई लिफ्टेड दैट कॉल, आई आंसर्ड देम, आई ड्राइव विद देम. तो पहले 1-1.5 साल तक यहाँ से हमारा, जब हमारे रेवेन्यूज आने शुरू हुए तब हमें ये कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, नाउ वी नीड मोर पीपल टू मैनेज द थिंग्स, एंड इफ आई विल कंटिन्यू अलोन, वी विल नॉट बी एबल टू डू दैट. सो हमने कभी भी लोगों को ऐसे हायर फायर वाली पॉलिसीज के साथ नहीं रखा है. दूसरा, we onboarded people those who genuinely believe, because for me giving something extra to the customer is always matters the most, and that is the main line what the smart taxi stands for. So मुझे वही लोग चाहिए थे कि जो बीइंग ऑन अ ग्राउंड हो, या फिर मतलब हमारे कार पार्टनर्स, कार रेंटल पार्टनर्स हो, या फिर हमारे ओन एम्प्लॉयज हो. दोनों में ये झील चाहिए कि वी वांटेड टू डिलीवर समथिंग बियॉन्ड सर्विस. सो ह्यूमैनिटी होनी चाहिए कि जो भी हमारे कस्टमर्स क्या पूछ रहे हैं हमसे, हम उनको क्या बताना चाहिए, कैसे कैसे उनको असिस्ट करना चाहिए. So we always ensure that we selected very few people from those who have interviewed, but we ensure that जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनका और हमारा विजन ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए. So this is how we have built up our team. Right now we are a team of 6 members. Okay, those who are managing entire operations. हमारे पास consultants भी हैं, those who are working with us. They are other than the team members what I quoted. उसके ऊपर हमारे channel partners हैं, those who are available on ground. And we have formulated our inter business policy in a way कि अगर हमें जरूरत पड़ती है, whenever we need, our channel partners also can be acted as a representative of the smart taxi. There is a clause in agreement what we have fetched into it. So that is how we have built up entire network across India. So हम बोल सकते हैं कि हमारा कोई बैंगलोर में, जैसे we don't have any office in Bangalore, but we still have a presence and manage entire operations because we have channel partners recruited over there. So इसी तरह से हमारा entire operation build up हुआ है. This is how we have built up a team despite of not opting for any of the funding. To answer that question, I hope I have answered that. Rushi, एक बार आप प्लीज पूछते रहना, because of this is just like a one-way communication. So it is important for to ask the people whether their queries have been rectified or not. Correct. Yes. So Ritesh, yeah, did this answer your questions, or do you have any further to add, Ritesh, or any other things that you want to more clarification with this? You can unmute yourself and also talk, Ritesh. I think there is no query. We can move to next. Yes. Okay, then let me go to the next question. Yes, it's a wonderful startup. Have been following you on LinkedIn from Hiren. Okay, so just yeah, thanks Hiren. Yes. Now a question from Dinesh Kumar. Hello sir, can you tell about your USP story? How you manage that question and how we can bootstrap? So Yeah, I it's already about explained. If you heard this, it has already been answered in the interview, in the beginning introduction what I have given about the company. USPs, as always, we have kept our customer experience as our USP. That means personalized touch in each and every ride we give, and each and every customer we treat them with a personalized focus. So that is what probably the USP what we build. Now coming to Bootstrap, as I already stated that we have never opted or never wanted our customers to ride with us because of discount. कभी भी हमें ये नहीं जरूरत है, मतलब हम कभी भी कस्टमर को ये नहीं बोलते कि भाई आप डिस्काउंट ले लो और हमारे साथ जुड़ो. नो, वी एक्चुअली अलाउ देम टू वैल्यू आवर सर्विसेज. वो हमारी सर्विसेज को समझे, वो हमारी सर्विसेज को जाने और उसी बेस पे हमारे साथ जुड़े. और वही प्रोबेबली रीजन है आज भी हमारे यहाँ पे जितने भी बुकिंग्स होते हैं उसके 86% ऑफ बुकिंग
प्योरली वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं. दैट मीन्स 86% हमारे दिन के पूरे भी बुकिंग्स है उसमें से 86% वर्ड ऑफ माउथ है. 64% हमारा रिपीट बुकिंग रेशियो है जिसमें हम कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं करते फिर भी अगेन कस्टमर्स दे बुक अस. सो दीज नंबर्स दे स्पीक अबाउट हाउ यू कैन बूटस्ट्रैप में जनरली सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहता है स्टार्टअप में कि हम लोग एक्सपेंस ही इतने सारे कर देते हैं कि जिसके बाद में हमारे पास रिटर्न कुछ भी नहीं रहता. वी कीप ऑन एक्सपेंसिंग आइदर मे बी ऑन गूगल एड्स मे बी ऑन फेसबुक एड्स. बट एक्चुअली आपको एक्सपेंस करने की जरूरत है आपके कस्टमर को एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए. अगर आपके पास जो भी ऑर्डर्स आते हैं आप उस ऑर्डर को अगर सही तरीके से फुलफिल करते हैं, इफ यू आर फुलफिलिंग दैट ऑर्डर्स in a well mannered, in a absolutely professional way which delight the customer, I'm sure you will have to spend very less into a marketing जो आपके ये सारे expenses बचाएगा. आपको efforts जरूर उसमें ज्यादा लगाने पड़ेंगे but थोड़ा time भी लगेगा. But at one day you will just have to sit and enjoy gaining the loyalties from the customer. That is what I would like to say in answer to your question. Yes. Thanks, Dhruvam, sir. Yes, it was a question from Dinesh. Dinesh, did that answer your question, Dinesh? Yes, sir. Thank you, Dhruvam, sir. Actually, it gave me a good confidence. Thank you. Great to know that. Yeah, Yes, actually, Rishi, next question. yeah. Yes, sir. The next question is from Dheeraj Sharma. Hello, sir. I have a question on B2B front. How do you induce trust as a beginner for B2B front? Okay. See, very good question because most of the time, as a startup people, those who are starting it up, generally corporate customers, they hardly put trust on you, and this always remains a challenge for any of the company because they always would like to go with somebody who are more into business from a longer time. So आज अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो 2 साल से है और कोई कंपनी है जो 10 साल से है, तो B2B में हमेशा से ये रहता है कि जहाँ पे लोग 10 साल वाली कंपनी को पहले प्रीफर करते हैं. अभी टू ब्रेक दिस इट इज वेरी सिंपल थिंग. हमेशा आपके कस्टमर्स को आपका वैल्यू रिप्रेजेंटेशन जो होता है वॉट एवर द वैल्यूज यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंपनी, जैसे हमारी कोई भी वैल्यूज होती है, इट इज अ प्रोफेशनलिज्म, इट इज ट्रांसपेरेंसी, इट इज बिजनेस पॉलिसीज. उसके साथ साथ छोटी जो कंपनी होती है दोस वर फ्रॉम फ्रॉम पास्ट 2 years, जैसे मैंने 2 साल और 10 साल वाली, सो आई कंटिन्यू टेकिंग दैट एग्जांपल. 2 साल वाली कंपनी में 10 साल वाली कंपनी से ऑलवेज बिजनेस पाने की झील ज्यादा होती है. दैट मीन्स these companies are सबसे पहले तो उनको ऐसा रहता है कि they are just like one of the client, whereas for 2 years company they are just like bread and butter for them. So definitely they are going to focus. Abhi it is purely depend upon you how you are representing your company to the customer. आप क्या वैल्यूज उनको समझाते हैं, किस हिसाब से उनको फील करवाते हैं कि आप अगर हमारे साथ आएंगे तो वी विल गिव यू अ पर्सनलाइज्ड टच. सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, आपको करके भी दिखाना है. जैसे जैसे एक बार अगर आप कोई भी कॉर्पोरेट में एंट्री आपकी हो गई, दैट मीन्स उसके बाद में आपके बाकी कॉर्पोरेट के रेफरेंसेस, उसी कंपनी के रेफरेंसेस के बेस पे यू विल एबल टू ग्रो. काफी एम्प्लॉयज, बिकॉज एम्प्लॉयज में क्या होता है, दे कीप ऑन दे हैव डिफरेंट कलीग्स इन डिफरेंट कंपनीज, सो दे कीप ऑन चैटिंग विद ईच अदर अबाउट. एंड कई बार ऐसे भी होता है दैट हमारे काफी पुराने, मतलब जो भी हमारी पहली या दूसरी कंपनी थी जिनके साथ हमने टाइप किया था, उन्हीं कंपनी के एम्प्लॉयज ने हमें बहुत सारी कंपनीज के अंदर अपॉर्चुनिटीज दिलाई जिनको आज भी हम सर्विस दे रहे हैं. So this is how things grow. पहले it is very hard for you to, but you have to prepare a value proposition. आपको थोड़ी सी झील दिखानी है द कस्टमर को कि भाई हम लोग आपको किस तरह से अलग सर्विस दे सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंट इन यू इफ दे आर राइडिंग विथ यू. तीसरी चीज है अपने प्राइस पॉइंट ऑलवेज सही रखिए. डोंट सेल योर सेल्फ अंडर वैल्यूड, कभी भी मत करिए. जो आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट के हिसाब से दिस इज व्हाट आई हैव टू चार्ज, यू चार्ज एज पर दैट. शुरू में आपको रिजेक्शन जरूर आएंगे, लेकिन एक बार एक लेवल ये आएगा जिसमें पीपल विल रिकॉग्नाइज कि अगर अच्छी सर्विस चाहिए तो यहाँ पे जाइए. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू क्रिएट, और ये कभी ओवरनाइट क्रिएट नहीं होगा. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर, दैट B2B में ऑलवेज इट इज डिफिकल्ट, इट इज ऑलवेज अबाउट मोर प्रोफेशनलिज्म, मोर इंटीग्रिटी. आप कितना इंटीग्रिटी, कितना एथिकल वैल्यूज फॉलो करते हैं, और व्हाट बेस्ट यू कैन गिव टू योर कस्टमर्स विद समबडी एल्स हु इज already with serving customers are not able to give that. अगर आप वहां पे उनको पिच करते हैं तो definitely you have a chance to join, and we have personally experienced that. To answer the question, yes Rishi. All right, sir. Thank you. I got the answer. Thanks, Dheeraj. Shan.
Yes, the next question is from Vasu Prada. Interesting stories. Thank you. There are many pointers that we can adapt. Just curious, how was dealing government related processes since you operate across multiple states in a country? So about dealing with government processes, Dhruvam sir, how you deal with that See, when you work? generally, we yes, it is a point for a startup that for a startup it is more important to focus onto a business. So you always, if you are starting up something new or maybe you are already into a business, always make sure that you don't end up something where you are breaking any laws of the government. Okay, या फिर किसी taxation norms में आपने you are not able to fulfill. कभी भी when you don't go into that level ever, because these things will never allow you to focus on your business. They'll keep things. So what you do is you always maintain your boundaries, which is way beyond what government has allowed you to do. Now generally, just to dealing with multiple states, fortunately, whatever the compliance is, each and every as a road transportation guidelines, RTO guidelines, we always operated with commercial past vehicles with which all the documents are verified. जो भी drivers हमारे रहते हैं उनकी profiles verified रहती है, they are very licensed, insurance vehicles के रहते हैं, they have PUCs and everything. So these things we always ensure so that we don't end up into anything breaching any of the law. Secondly, in terms of a taxation, we got a lot of time many of the queries कि भी हमारे पास हम लोग आपको कैश में पे कर रहे हैं, हमें बिल नहीं चाहिए, आप हमें टैक्स मत लगाइए. We literally say no to that customer and we say that कि सर अगर हमारे पास से राइड होगा तो बिल आपको आएगा, अगर बिल जनरेट होगा तो बिल में टैक्स जरूर लगेगा. So we were always ensure. आज भी there are many times people they place a query कि यार we need 7-seater but we are 8 travelers and all 8 are adults, so can you allow us to travel? We clearly say no to them. Either they have option to hire 2 cabs from us or they have option to reduce the passenger count to 7. So always ensure जब भी आप स्टार्टअप में होते हैं, आप जितना भी हो सके उतना गवर्नमेंट के सारे कंप्लायंसेस फॉलो कीजिए सो दैट आप उसके अंदर ना आए. कमिंग टू डीलिंग टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, आज तक हमें ऑलवेज वी आर अ कंपनी विच इज फॉलोइंग मोर ऑन इंटीग्रिटी. आज तक हमारे कोई भी डिले गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं हुए हैं. मतलब वी हैव नॉट एग्जीक्यूटेड एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद एनी ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. We got certain opportunities in a past where we were able to get huge amount of business, but there was integrity issue because of which we have said clear no to them and we rejected that deal. And that is from that day till today we always try to focus onto the people, those who are riding with us, those who are wanted to give the business to us because of our values, because of our services, and because of our quality standards what we follow, rather than going for any monetary or non-monetary benefit. So this is what answer to your question. Thanks, Dhruvam sir. Thank you So so much. answer your question. Yes, of course. And it's a great pleasure talking with you and hearing from you with your vast experience. And kudos to you on all the achievements so far. So thank you. Thank you so much. Yes. Thanks. Now the next question, Dhruvam sir, is from Yes Arora. He is also into a startup on the interior design in a Bangalore, and they provide complete home interior solutions. Now his question is, now we want to work on those points where other companies fail. Now want to expand our business and how to make a core team and how to expand it, and also how to make stand in market when there are so many similar competitors. So how you deal with the competitors and how you expand the business kind of that way. Okay. Now see here, there are 2-3 things what you have asked in a similar question. So if you wanted to, let me just answer it one after another. The first thing you asked that how we wanted to stand up in a market where there are competitors available. It is, let me just simplify it in a very simple way. आपने कभी जैसे दीवार में हम लोग घर पे कभी भी whenever we fix a painting we always need to fix up a nail first. Okay, now there are points where at some point of time when you're fixing up a nail, it may not be able to fix them well. What you do it, you try it at some another point. Again you try hammering it and again it, then finally it picks up well at a point which is more suitable. तो यही चीज आपको स्टार्टअप्स में भी रहती है. एक जगह पे आपने ट्राई किया, you found that this place is not working, just change your strategies a bit.
Okay, don't change entire vision. पूरा business change मत कीजिए, business remain it as it is. Just उसकी policy strategies थोड़ी सी change कीजिए, price थोड़े से change कीजिए and put it again, play it again. This is how constantly you will find a space where you will feel that नहीं अगर मैं यहाँ पे if I am selling to this place or this price or maybe at this policies, I am able to compete with my players, with my competitors well, and I am more acceptable for the customers as well. That is where the price point where you have to operate. So it is a constant effort. कभी भी एक बार में दो बार में ऐसा नहीं होगा कि आप you will able to stand against the competition. It took around 2.5 years for us against to beating the competitions and standing against them. So always time लगता है. उस time को आपको you have to have patience in you to deal with these things and these details. Coming to second thing, लोगों को ट्रस्ट कैसे करवा. इट इज वेरी बेसिक. सी पीपल ऑलवेज ट्रस्ट वैल्यूज, दे डोंट ट्रस्ट योर प्रोडक्ट. आप हमेशा अगर आप ये समझते हैं कि आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो पीपल दे डोंट बाय योर प्रोडक्ट्स, दे बाय योर कमिटमेंट, दे बाय योर वैल्यूज व्हाट यू ऑफर टू देम. सो ऑलवेज एंश्योर कि वो वैल्यू के जो प्रोजेक्शंस है, यू आर प्रोजेक्टिंग वेल टू द कस्टमर, दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट नॉट ओनली प्रोडक्ट एंड सर्विस, व्हाट वैल्यूज यू आर एबल टू ऐड इनटू दैट लाइफ. हमेशा से अपने जो भी जैसे भी जब भी आपका कन्वर्सेशन होता है कस्टमर के साथ, सो यू ऑलवेज ट्राई टू प्रोजेक्ट टुवर्ड्स दिस लाइन रादर देन फोकसिंग ओनली ऑन टू दिस ऑन टू अ प्रोडक्ट और सर्विस. तीसरी चीज जो है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया, ऑलवेज अपना जो प्राइस पॉइंट है वो हमेशा फिक्स रखिए. ऑलवेज डिस्काउंट ऑफर करके किसी कस्टमर को कभी भी गेन मत कीजिए, बिकॉज इनिशियली यू मे एबल टू सी अ लॉट ऑफ सर्च इनटू सेल, बट एट द लॉन्गर टर्म whenever you scale up the price or whenever you will check up the price, nobody is going to take your services again. So you need to ensure कि आपके कस्टमर आपकी सर्विस की वैल्यू करें, आप जो भी एडिशनल या यूनिक चीजें दे रहे हैं उसकी वैल्यू करें, rather than only on the price. Because price game में there are a lot of people, those who will come with very deep pocket and they will just hit you, maybe make you vanished in just 2 or 3 days. अगर price point is the only thing which is USP for you. तो कभी भी एक यूएसपी पे काम मत कीजिए, अलग अलग यूएसपी पे काम कीजिए, एंड दैट मेक दैट एज योर पावर and then move ahead. So this is how what you need to compete whenever you are into a startup to with a big player. एक पेशेंस चाहिए, एक यूएसपी चाहिए, और तीसरी कस्टमर की वैल्यूज चाहिए. जो वैल्यूज आप देना चाहते हैं वो उसके ऊपर अपना फोकस और प्रोजेक्शंस रखिए. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू गुड थिंग्स इनटू फ्यूचर एंड फॉर द लॉन्गर टर्म एज वेल. यस ऋषि. हेलो. Thank you, Dhruvam sir. Yes, I hope it's answered your question. Yes. Yeah, it was good. And thanks, sir, for your answers. And it was like really value added. And hope I'll work on all my USPs. And Yes. soon we'll stand in the market. It was Yeah, of very course. It great. is, see, Yeah. standing it is always, because startup is never about competition or never about beating anybody else. It is always about how long you are able to survive. So always focus on survivability first for the startup, because पहले शुरू दिनों में whenever you are going to focus more on to growth and other things, it may take time. But first you have to focus on two things. Number one, how you are going to survive. आपकी survivability कैसे करनी है. पहले ठीक से खड़े रहकर मतलब खड़े होना सीखना है. So first we need to stand ourselves firm, and then we need to start moving on. So it is people, what they do is from first day itself they start running, so they may fall multiple times. So it is not the right way. First make yourself firm, just stand it straight, and then you start putting small steps. So in expansion key, there was a question for expansion as well. Expansion also happens very similarly. First you have to put yourself stand into a market. You have to create some values. आपके पास कुछ customer base होनी चाहिए. You need to deliver certain, this is you are into interior designing concept. My wife is also interior designer. So we have to build up a customer base where you can project your work कि सर मैंने ऐसा काम किया है, this is what I have done, this is the customer whom I have served. So जैसे जैसे ये चीज आएगी उसके automatically you will start getting confidence into your model, and then you will able to expand. और core purpose जो है, whatever the vision with which you started the company, never allow that to get compromised ever in your life. Because काफी बार ऐसे होता है, लोग स्टार्टअप शुरू कुछ और पर्पस से करते हैं, देन फाइनल दे एंडिंग अप इनटू सम डिफरेंट पर्पसेस, बट दैट शुड नॉट बी द केस एज अ पर्सन, व्हाट आई बिलीव पर्सनली. सो that's it, Rushi. I think we are able to hope I answered your question. Yes, and Rushi, we are ready to take for the next question. Yeah. Yeah, Thank you, sure. sir. Thanks. Yes, the next question is now as you scale up,
how do you ensure quality of drivers? Human behaviors are subjective even for drivers. Yes. So related question with for drivers' behaviors and how you manage it with the quality. Quality and driver behavior management, as I already stated, that whenever we hire, it is not like anybody who hold a cab and a license they can drive for the smart taxi. No, we actually evaluate them from 6 step of process, which includes which verify their professionalism, which verify their documents, and where we verify their characters. We also do police verifications as well. Finally, we also on a, about to it, we take their interviews. So we many point of time, let me just take an example, that whenever we hire a driver along with a car, because we generally don't deal with individuals, we deal with fleet owners, those who at least hold 5 or 10 or maybe more cars onto their own. So we directly connect with them. So what we do is, we if they have 40 fleet of cars and they wanted to get associated with all 40 with us, we screen actually all the vehicles first. We maintain, we check their conditions, and we select out of that 40 the best 10 or 15 vehicles which can drive for us. So that ensures that whichever, we maintain a database with us. So whenever the customer books a ride, we ensure that the cars which are going to customer are from the same database. Number one, so that ensures a quality standards. Number two, about driver behaviors, we take interviews of the driver, that and we ask certain real life questions कि भाई अगर आपकी कार में alone, if some lady is traveling alone in your car, what are the extra precautions you need to take, which mirror you will use more, which mirror you will not be using more, if there is some person, if there is a lady who is pregnant and riding with you, so what extra care you will take. So based on their answers, we decide that how genuine, how courteous that driver is. Because as I already stated, we don't need people those who just deliver taxi services. No, there are enough number of players available in the market, and we don't wanted to add one more name to it. We want people who can give experience to the customer, something beyond than the service. And we always ensure that while selecting them, we follow this process to make sure that our vision, our purpose is fulfilled in every ride. And this is probably the reason आज तक जितनी भी हमारी राइड्स हुई हैं, 2.3% of our rides have faced an issue. 98.2% of rides, absolutely they are flawless. That means they do not have any of the issues in any of the complaints. It was with 5-star rating, you can consider as. So this is probably the reason, why despite of scaling up, we have never compromised our values, and that is the reason, despite of having services in 42 cities, we are still managing entire operations with 920 plus cabs available with us. Otherwise, it could have been 10,000 as well, but we have not focused on to that. To answer a question in a very simple and straightforward way. Yes, thank you, Dhruvam sir, and I think that's answer your question also. Yeah, yes, it did. So I was looking more at risk which is not under our control, which would happen during the course of the company, and that will directly impact the reputation gained so far. So that you answered it, and I have to adapt it for the use case that I would have. So thank you so much for sharing your thoughts on it. Thank you. Thank you. Okay, the next question is about from Ritesh. What was the lowest moment in your life in your startup journey? So, what is on your startup journey? The lowest moment. Lowest moment, I'm sorry, I'm not much. Ritesh, can you please unmute yourself and ask it directly? Is he there? Yes, it is. He I is think there. he's not. Yes. I'm not sure. I asked him also to unmute. Hello, sir. Actually, it was Yeah, I was facing a problem. I'm unmuting myself. I just wanted to know what was the lowest moment in your life in your startup journey. lowest in the sense how you would like, matlab, what is the definition for lowest? Because it may be in terms of a financial, it may be in terms of a motivational, it may be in terms of revenues, or how it is. Uh, like when you lose something, like you are not feeling like कि अब कुछ हो सकता है and you're gonna start it. Maybe it can be financially, it can be like, and ठीक है, also चलो, I got the question now. हाँ, बोलिए please. and also what's your take up on the college students who are starting their own startup? What's your point? Generally, it may, because see, we have around 5 minutes left, so let me just try to answer both the Mhm. questions if I could do.
Number one is you asked that what is the lowest moment. Lowest, as I said, whenever the initial 90 days where we do not have any of the inquiries and orders, कहीं से कोई भी call नहीं आता, तो that was probably the lowest time of my life where I felt दो startup दो EMIs हमारे already bounce हो चुके थे, where I already started getting calls from bank to pay that EMIs, and I know how difficult it was for us. So that was the time, but as I already stated parallelly that it was something which was constantly driving me towards my vision. और वो इसी चीज की वजह से शायद आज हम लोग डिस्पाइट ऑफ एन नंबर ऑफ फेलियर्स we faced during our entire journey, we are still standing firm and moving ahead into the direction what we have dreamed for. So it always the passion and always the persistence which actually plays a key role in this kind of a scenario. और ये दो आपको अगर लगता है मतलब these two is there with you, I'm sure you'll able to climb a lot of mountains despite of a number of difficulties. Coming to second questions that is related to college student. College students may there are few advantages as well. There are few disadvantages as well. Whenever you are starting as a college student, you are very young as a age. That means you get more time to make your company settle. Now, suppose if I take my example, I started as a 30 years when I was at 29, 30. Then I started because before to that 8 years I have spent myself into corporate companies. तो शायद कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद मैंने थोड़ा सा पहले शुरू किया तो वी हैव बीन अ बेटर Does it answer your question, Ritesh? Yeah, yes, sir. Got it. Thank you so much, sir. It's really inspiring. Yeah, so I was just able to finish the last one. And so for college students, it is always like whenever you join to corporate companies, you actually come across certain policies, लोगों के साथ डील कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको शायद कॉलेज स्टूडेंट्स लाइफ में नहीं पता चलेगी, which you will able to come across more into corporate companies. So अगर आपको उसके साथ में कोई experience है, so this will be adding a values to your companies and definitely it will be to a startup as well. So to answer your question. Got Ritesh, it. any Yeah. yes, No, sir. Thank you so okay. much, sir. Rishi, anything further? We have 3 minutes left now. Hello. Yes, Dhruvam. Yes, we have one question from Hiren Mehta. We have planned a startup for a platform which offers training and internship. So, how to go about building a MVP since we have different ideas? So, how you See, build it a MVP? actually depends upon MVP. It is purely depend upon the target market what you are. Just you are planning for something to as a startup what you have decided. So just for you maybe the suitable audience you will able to instead of relying only on social medias or only on Google for publicizing yourself, it is better you go to the ground, meet your real audience, and then you take their feedback. Just introduce whatever you have right now, just introduce that, take their feedback, make a correction, and that is how after certain period of time, maybe around for 30-40 sample customers what you have in the initial days, after that you will able to come out with something which will be more perfect, more MVP operated. So it is nothing like on the first instance you will come to know that this is what my MVP is and this is what I wanted to operate. So it is always an efforts and learnings what you take from the customer, how you inculcate that into your product or service, and then finally you will come up with something which will be more acceptable for the customer. So जिस दिन आपको ये लगता है कि अगर मेरी ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने से कस्टमर के एक्सेप्टेंस बढ़ रहे हैं, consider that as your MVP. Till that time you always have to keep on learning, keep on implementing the things depending upon the feedback what customers are giving to you. So this is what you can do. Thank you, Dhruvam sir. I think we are on top of the time. So, Yes. yes, yes, and I think that's all about the questions also. So I think we are right on the time, sir. Yes. Any last comments, sir, Thank you. for the No. Dhruvam sir, thank you very much. Yeah, I just wanted to thank you, sir, for your time. Absolutely. Thank you. No, brilliant session we have. Thank you, Dhruvam sir? Any last comments for the people? That's not always follow your passion and whenever you are dreaming, because it is always start with the dream. So हमेशा सपने देखिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ उसको पूरा करने के लिए you have to apply efforts.
अपने आप में थोड़ा धैर्य रखिए, थिंग्स कीप पेशेंस इनटू यू, कभी भी चीजें ओवरनाइट नहीं होती है। और तीसरी चीज है, हमेशा कोई भी फेम या वैल्यूएशन के लिए काम मत कीजिए। स्टार्टअप का जो कोर पर्पस है, इट इज टू सॉल्व अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। हमेशा से अपने कोर पर्पस पे अड़े रहिए, हमेशा से अपने कोर पर्पस पे फोकस कीजिए। वैल्यूएशंस, प्रॉफिट लॉस, ये सब आते जाते रहेंगे, इट विल कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। बट आपको अपना विजन जो है, दैट इज टू क्रिएट समथिंग बेटर, टू गिव समथिंग गुड टू द पीपल। और अगर ये आपकी सेंट्रिसिटी में रहा तो डेफिनेटली बाकी सारे पैरामीटर्स अगर अलाइन नहीं होंगे तो सूनर और लेटर आपके डेफिनेटली अलाइन हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली. It's a 1 hour session, but I never felt that it is so long. So thank you so much for asking all the questions. People have asked great questions, and I'm sure I was able to justify myself. Those who are connected with me on LinkedIn, thank you for them as well. Those who are keeping and engaging myself, onto posts, what I keep on sharing and things. Thank you so much. Thank you, Rushi, for this session, and have a good day. Thank you, sir. Thank you for your nice session, and I think we really learned lots from you and your very much inspiration. And thank you everyone for joining, and be a wonderful audience. Yes, thank you. Thank you everyone. Good day. Good day.